Hello everyone. Let's continue with the next layer, that is the transport layer. Okay. So what is the role of transport layer? Let's see. So it is responsible for end-to-end delivery. Transport layer that is responsible for end-to-end delivery, or we can say it is responsible for process to process delivery, right? It is responsible for process to process delivery. You can understand like just a minute. Here this is what a system and this is what another system, right? And here this is what the IP address assigned, here IP address assigned to this one, right? And here there is a particular process and here there is a particular process. Okay, so that so here network layer that is responsible for source to destination. This is what a source system and this is what a destination system. So network layer that is responsible for source to destination. But if we talk about the transport layer, it is responsible for process to process delivery, right? Process to process delivery. So here from this process to this process, right? We want to communicate with this process to this process. There will be the role of transport layer. It means there will be the particular port number used for the process. So for this process there will be the particular port number, for destination also there will be the particular port number, right? So this is what the case of from this IP address to this IP address, this is the responsibility of the network layer, and from this process to this process, this is what the responsibility of the transport layer. Is it clear to all? Okay, fine. Now there is a next question that all over the world I want to identify a process uniquely, right? I want to identify a process uniquely all over the world. Then what are the addresses required? What type of addresses we require? I want to identify a process uniquely all over the world. Then what are the addresses required for that? Okay, IP address, IP and MAC address. Okay, let me tell you. To identify the particular process uniquely all over the world, one thing you required the IP address. First thing you require the
IP address to identify the particular system, right? Uniquely identify a particular system, you require the IP address, right? After that, inside a system there can be the multiple number of process, right? Inside a system there can be multiple number of process, right? Then to identify the particular process you require port number also, right? For that particular process you require the port number also, right? Then we can access the particular process, right? And a combination of this IP address and port address, it is known as socket, right? तो इसको क्या बोला जाता है? Socket. So combination of IP address and port address is known as socket. Is it clear to all? Yes. What about others? Okay, fine. So one thing, transport layer is responsible for end-to-end delivery. Another thing, it is responsible for process-to-process delivery. Next thing, it is responsible for flow controlling, right? And for flow controlling, maximum time we use selective repeat. We can say 75% time we use the selective repeat SR protocol at a transport layer. And what about the error control? It is responsible for error control also. For error control we use checksum here. At a transport layer we use checksum. At a data link layer we use CRC, cyclic redundancy check, at a data link layer. But at a transport layer, for error control we use checksum. Next, it is responsible for segmentation, right? It is responsible for making segments. Next, it is responsible for multiplexing and demultiplexing, right? So what is the multiplexing and demultiplexing? Assume that this is what a system, and here this is what the another system. Here it is source, here it is destination, right? So there can be the multiple process here, and here also multiple process, and they have their port number also, right? So here we'll do the, and they will go through the single link, they will go through the single link. So here we require to do the multiplexing, multiple things into single link, right? Multiplexing means many into one. And after that here we require the demultiplexing means one into many, right? So here it is many into one, and here it is one into many. It means it is responsible for multiplexing and demultiplexing, right? Next thing is transport layer, that is responsible for congestion control, right? There will be the there may be the heavy traffic over the router and buffer is full, right? So we need the congestion control at that time, right? We need the congestion control that can be done with the help of transport layer, right? Or we can say transport layer that is dealing with congestion control. So is it fine to all? Okay, fine.
So finally, let me summarize. So transport layer, that is responsible for end-to-end delivery, process-to-process delivery. It is responsible for flow control, error control. It is responsible for segmentation. It is responsible for multiplexing and demultiplexing, and it is responsible for congestion control. And I hope it is clear to all. Now let's move to the next layer. Okay, so next layer is the session layer. Session layer, it is responsible for authentication and authorization, right? Session layer, that is responsible for authentication and authorization. Authentication means that login information, who are you, right? Login information means someone is trying to log in that case it will identify that who are you. Okay, what about the authorization? Authorization means what permission do you have. Authorization means that what permission do you have. So this is what the authentication and authorization. So session layer is responsible for that. Next thing, it is responsible for checkpointing. Checkpointing means whenever we are downloading something, right? Here it is a 0%, and assume here it is a we have a mm, downloaded the 0 byte. Here we have downloaded 100 byte, and here we have downloaded 200 byte, and here we have downloaded till this part we have downloaded assume that 210 bytes, and assume that this at this place download is fail, right? At this place download is fail, then what we'll have to do? Again we need to download all these things? No, we'll go to the checkpoint. So this is the last checkpoint 200 byte, right? So 200 bytes के आगे जो कुछ भी था उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा. बट ये जो पार्टीशंस है ये क्या है, ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है. तो हमने क्या डाल रखा था यहाँ पे, चेक पॉइंट डाल रखा था, राइट? सो लास्ट चेक पॉइंट जो होगा वहां से फिर से डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा. तो जैसे देखा होगा कई बार डाउनलोड करते हैं और स्टॉप हो जाता है बीच में, किसी वजह से कोई एरर आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या करना होता है, रिज्यूम करना होता है. तो जब रिज्यूम करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट चेक पॉइंट से वो स्टार्ट होता है. सो दिस इज व्हाट द केस ऑफ चेक पॉइंटिंग. सो टिल दिस पार्ट इज इट क्लियर? Clear. Okay, fine. Now let's see the next thing. Next thing, it is responsible for synchronization. Just a minute. Yes, it is responsible for synchronization. Synchronization between what? It is responsible for a synchronization of audio and video. Means it is synchronize the लिप सिंकिंग, राइट? लिप सिंकिंग को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है. जैसे कि एक्सप्रेशंस, जैसे कोई वीडियो चल रही है तो उसके एक्सप्रेशन अगर अलग आ रहे हैं और वॉइस थोड़ी देर बाद आ रही है तो वहां पे क्या नहीं है, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, राइट? तो उस केस में वो मतलब बेटर प्रेजेंटेशन नहीं होती है कि उस प्रेजेंटेशन में उसका जो एक्सप्रेशंस है वो पहले आ रहा है और वॉइस क्या आ रही है, बाद में आ रही है. इट इज़ नॉट द बेटर प्रेजेंटेशन. तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, बेटर सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, राइट? सो दैट सिंक्रोनाइजेशन इज डन एट द सेशन लेयर. And what about next one? Next one is dialogue controlling.
So it is responsible for a dialogue controlling also. Dialogue controlling means assume that this is the conference and these are the members in the conference, and this is what the main head person, right? So in case of dialogue control, we can control the dialogues like here this person can only listen and this person can send the message and also it can listen, right? So here this is what the half duplex, and here at the same time they both person can communicate. It means here we are applying the full duplex, here we are applying full duplex, here it is half duplex, and here we are applying simplex, right? So in case of conference dialogue controlling, that can be simplex type, half duplex type, or it can be full duplex type, right? So mainly it is responsible for this one also, dialogue controlling. Dialogue controlling का मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गया, उसमें सिंप्लेक्स अप्लाई करना है, हाफ डुप्लेक्स करना है या फिर फुल डुप्लेक्स अप्लाई करना है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. So till this part, is it clear? Okay, fine. Next thing, it is responsible for logical grouping. Logical grouping means these are the individual things, right? These are the individual things, then it will do the logical grouping between these things, right? And logical grouping means atomicity वहाँ पे आ जाएगी, right? There is the case of atomicity. तो यहाँ पे लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए भी ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेशन लेयर. और फाइनल थिंग्स, इट इज एप्लीकेशन डिपेंडेंट, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेशन डिपेंडेंट. कहीं पे हमें सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, हर एक एप्लीकेशन में नहीं आएगी. किसी एप्लीकेशन में चेक पॉइंट की रिक्वायरमेंट आएगी, हर एक में नहीं आएगी. किसी में ऑथेंटिकेशन और अथोराइजेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, राइट? सब में नहीं आएगी. इट मीन्स दिस इज व्हाट एप्लीकेशन डिपेंडेंट. तो ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, राइट? सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेशन लेयर. नाउ टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? Clear? Okay, fine. Okay, after this one, we'll discuss about the presentation layer. So next layer is the presentation layer. So presentation layer, it is responsible for translation, right? Translation from what? ASCII code to the ABDIC code, right? So it is translating from ASCII, American Standard Code for Information Interchange, to extended binary coded interchange code. Okay, so it will translate from ASCII to ABDIC code. Next thing, it is responsible for encryption and decryption, right? It is responsible for encryption and decryption. Next thing, it is responsible for compression. Compression means reducing the size, right? So compressing means reducing the size, and encryption and decryption, you know that your WhatsApp, that is end to end encrypted, right? So there is the encryption, means
only sender and receiver, they can know about that one, third party cannot know about that one, right? So encryption and decryption, uh, that is the responsibility of presentation layer, and all these things are application dependent. So above things are application dependent. Translation, encryption, decryption means every application that not require the encryption decryption, every application don't require the compression also, right? So these things depends on the application. So here it is application dependent. Now tell me, these points are clear or not? Yes, what about others? कोमल, लक्ष्य, गीत। लक्ष्य ने तो बता दिया। गीत, कोमल और और शालू। Okay, fine. Now let's see the next, that is the application layer. Okay, so if we talk about application layer, it is mainly responsible for the user interaction, right? It is mainly responsible for user interaction. And major we will discuss about the protocol of the application layer. One is the HTTP, hypertext transfer protocol. Another one is SMTP, simple mail transfer protocol. And another one is FTP, file transfer protocol. POP, post office protocol. And it is a telnet, telecommunication network, right? So these are the major protocols of the application layer, and there can be the thousands of protocols over the application layer, but these are the major one. We'll discuss about all these protocols one by one. ओके, सो अभी नहीं करेंगे, लेटर स्टेज पे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो मेनली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजर इंट्रैक्शन। मीन्स यूजर डायरेक्टली क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि ये कोई एप्लीकेशन चला रखी है यहाँ पे, तो यूजर यहाँ पे क्या करने लग रहा है, डायरेक्टली इंट्रैक्शन करने लग रहा है, राइट? सो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। Okay, so is it clear or not? Okay, fine. And this is what the end of the OSI model. Okay, now let's see. This is what a source, and here this is what a destination. Google is the destination, and here this is what the source. So we want to communicate with Google, then how to communicate with Google, what are the steps used? Okay, so
let's start with the application layer. Here this is what application layer. Just a minute. Here application layer, and next here it is a transport layer, then network layer, and here it is data link layer, and here this is what the physical layer. Assume that जो presentation session layer है उसको क्या कर दिया गया है, merge कर दिया गया है application layer में, right? और next is the transport layer, then network layer, data link layer, and physical layer. Here also physical layer, data link layer, network layer, transport layer, and a application layer. Okay. So initially what will happen, this source is source, or we can say this is what sender, and here this is what receiver. So sender want to send a message to the Google, right? Sender want to send a message to the Google. Then how to send the message, let's see. So at application layer, this is what a message, right? And at a transport layer, then from application layer we'll go to the transport layer. At the transport layer, what will you add? You'll add some of the information, right? We'll add some of the information. Out of that, two things are most important. One is the source port address and a destination port address. So here this is what the message, and after that we'll add the source port, let me say SP source port, and destination port DP destination port. Okay, after that it will go to network layer. So at network layer what will happen, so we'll add some of the important things. So we'll add this one, message, source port, destination port, this is what as it is. And at network layer important thing is what, IP address. Let me say here it is a source, let me say here it is A. So here we'll add the IP address of A. A means IP address of A, IP address of A, and next we'll add the IP address of destination, right? So IP address of destination means IP address of Google, right? So here it is IPG, right? So here we'll add the IP address of Google, that is IPG. What about the next thing? Okay, firstly confirm me till this part, is it clear? Okay, clear, fine. Now it will deliver to the data link layer. At a data link layer we'll add some of the important things. So this one entire, this is what a M source port, destination port, IP of A, IP of G, और उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है रहेगा मैक एड्रेस ऑफ ए. सो एम ऑफ ए, मैक एड्रेस ऑफ ए. एंड नेक्स्ट बताना मैक एड्रेस किसका आएगा, मैक एड्रेस ऑफ ए, ये सोर्स मैक एड्रेस हो गया. तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या आएगा,
let me say this is the router R1. तो यहाँ पे मुझे बताओ डेस्टिनेशन में इस गूगल का मैक एड्रेस आएगा या फिर इस राउटर R1 का मैक एड्रेस आएगा? Yes, so in this there will be the address of router R1. So MAC address of R1. Okay, so this is the story of data link layer. After that it will go to the physical layer. At physical layer what will add? Will okay, एक चीज़ यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे हेडर के, ये तो इसका हेडर है राइट, मैक एड्रेस ऐड किया है ना, ये तो हेडर है, इसमें एक ट्रेलर भी ऐड किया जाएगा राइट, हेडर के अलावा ट्रेलर ऐड किया जाएगा। ट्रेलर पे क्या होगा? CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज द फिजिकल लेयर। So at physical layer everything will be in the forms okay, at physical layer what will add? Will add the header of the physical layer. Okay, so at physical layer we'll add the header of physical layer. Now what will happen? It will travel in the form of bits and it will go to this router, right? So इस router पे क्या होगा फिर further on router there will be the physical layer, data link layer and a common network layer. This is the case. Here data link layer, here physical layer. Okay, for this port there are two port na, on this router there are two ports, one port is this one, another port is this one. For this port there will be the physical layer, data link layer and common network layer. For this port there will be the physical layer, data link layer and common network layer. Okay, so this is the scenario on that router. Now what will happen? So now we'll go to this physical layer, right? So at this physical layer what will happen? It will remove the header, right? तो ये क्या करेगा? यहाँ पे इसका header remove कर देगा। Next we'll go to the data link layer. अब data link layer पे क्या होगा? It will remove the header of data link layer. तो header में क्या था? ये और ये, राइट? तो इसने रिमूव कर दिया हेडर, और ट्रेलर जो ऐड किया था वो इसने डेटा लिंक लेयर पे रिमूव कर दिया। नेक्स्ट इट विल गो टू द नेटवर्क लेयर. एट नेटवर्क लेयर विल इट रिमूव द सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, और वी कैन से विल इट रिमूव द इट्स हेडर? क्या इसका हेडर रिमूव किया जाएगा यहाँ पे एट नेटवर्क लेयर? यस और नॉट? देखो फिजिकल लेयर पे हेडर रिमूव कर दिया, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे गए तो यहाँ पे हमने इसका ये हेडर रिमूव कर दिया और ट्रेलर भी रिमूव कर दिया। व्हाट अबाउट नेटवर्क लेयर? तो यहाँ पे सोर्स में आईपी एड्रेस ऑफ ए है और डेस्टिनेशन में आईपी एड्रेस ऑफ गूगल है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे रिमूव नहीं किया जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट ऑन गूगल, बिकॉज हमारा डेस्टिनेशन क्या है? गूगल है, तो डेस्टिनेशन इसके साथ मैच नहीं करेगा, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे पैकेट कुछ इस तरीके से रहेगा, ये मैसेज एम हो गया, सोर्स पोर्ट हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस हो गया, और उसके बाद क्या रहेगा? आईपी ऑफ ए और आईपी ऑफ जी, राइट? आईपी ऑफ जी। नेक्स्ट यहाँ से फिर कहाँ पे जाएंगे? इस वाली डेटा लिंक लेयर पे। जब इस वाली डेटा लिंक लेयर पे जाएंगे तो क्या करेगा? इट विल ऐड इट्स हेडर एंड ट्रेलर, ठीक है? तो इसके हेडर और ट्रेलर को क्या करेगा? ये ऐड करेगा। तो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा क्या? मैसेज
ट्रेलर ऐड कर दिया जाएगा। एक तो मैसेज हो गया, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और आईपी एड्रेस ऑफ ए, आईपी एड्रेस ऑफ जी और उसके बाद सोर्स मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस बताना क्या आएगा यहाँ पे, सोर्स मैक एड्रेस ऐड करेगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड करेगा। सो व्हाट विल बी द सोर्स मैक एड्रेस, मैक एड्रेस ऑफ R1 MR1 और व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, गूगल, राइट। सो MG मैक एड्रेस ऑफ गूगल, राइट। तो इसने इसका हेडर ऐड कर दिया और यहाँ पे ट्रेलर ऐड कर दिया। नाउ विल गो टू द फिजिकल लेयर, दिस फिजिकल लेयर, राइट। तो फिजिकल लेयर पे जाएंगे। एट फिजिकल लेयर एवरीथिंग इज सेम। उसके अलावा क्या ऐड कर दिया जाएगा, फिजिकल लेयर का जो हेडर रहेगा वो ऐड कर दिया जाएगा, राइट। नाउ विल गो टू द गूगल, राइट। तो यहाँ पे ये बिट्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगा डेटा और यहाँ पे चले जाएंगे। नाउ ऑन दिस फिजिकल लेयर इट विल रिमूव द हेडर ऑफ दिस वन, इसका हेडर रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ ऑन दिस डेटा लिंक लेयर इट विल रिमूव द हेडर एंड ट्रेलर, हेडर ट्रेलर को रिमूव कर दिया जाएगा और इसको क्या कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस डेटा लिंक लेयर का दैट आई हैव रिसीव्ड योर डेटा, ठीक है। तो इसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नाउ इट विल गो टू द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, नेटवर्क लेयर पे ये मैच करेगा, सोर्स आईपी एड्रेस इज दिस वन, डेस्टिनेशन इज दिस वन। तो डेस्टिनेशन के साथ इसका एड्रेस क्या है, आई ऑफ जी, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, राइट। तो इसका सोर्स और डेस्टिनेशन रिमूव कर देगा और इसके बाद नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या मैच करेगा, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट को मैच करेगा और इसको भी क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन। और ये एंड टू एंड डिलीवरी करता है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको इस ट्रांसपोर्ट लेयर को इन्फॉर्म करेगा दैट आई हैव रिसीव्ड योर डेटा। एंड फाइनली यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे क्या रहेगा, मैसेज, एंड दैट इज गिवन टू दिस गूगल, राइट। तो गूगल को क्या मिल जाएगा, ये मैसेज यहाँ पे मिल जाएगा।